Hello students and friends, you are studying statics and dynamics, which is a topic of UPSC mathematics. Today topic is motion in a resisting medium. Students and friends, like the channel, subscribe and share. Terminal velocity. A particle falling under gravity, then velocity v, when acceleration is 0, called terminal velocity denoted by capital V. Statement: if a particle falling down in a resisting medium, the resistance means like air has square of the velocity. To discuss the motion, suppose particle falls down or falling down from point O and P its position after time t. Weight of particle mg acting vertically downward and resistance mkb square opposite of the direction. Proof: let m be the mass of particle falling down from O. Let P be its position after time t. Such that OP equals to x. At point P, equation of motion m d2x upon dt square equals to mg minus mk v square और v dv upon dx g 1 minus k upon g into v square. If v is terminal velocity, d square x upon dt square equals to 0 and v equals to capital V. 0 equals to और k upon g equals to 1 upon v square. Equation 1. d2x upon dt square g into 1 minus v square upon capital V square और d2x upon dt square is acceleration, may be written in another form v dv upon dx equals to g upon v square minus small v square, separating and integrating, or dx equals to v square upon g v dv upon capital V square minus v square. dx plus c1 v square upon minus 2g minus 2v dv upon v square minus v square और x plus c1 v square upon 2g log v square minus v square at O. x equals to 0, v equals to 0. c1 equals to minus v square upon 2g log v square. Equation 2. Equation 2. X equals to
वी स्क्वायर अपॉन 2g log v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g log v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और x इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g log वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। और 2gx अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू log वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर e to the power माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। और स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस e to the power माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन v and x। रिलेशन बिटवीन v and x, relation between v and x। एक रिलेशन तो ये है स्टूडेंट्स। सेकंड, relation between v and t। relation between v and t d2x upon dt square equals to dv upon dt and equals to g upon v square into v square minus v square और dt equals to v square upon g dv upon v square minus v square integrating t plus c2 v square upon g 1 upon small 1 upon v tan hyperbolic inverse small v upon capital V और v upon g tan hyperbolic inverse at initially at O t equals to 0 v equals to 0 then c2 equals to 0 t equals to v upon g tan hyperbolic inverse v upon v। right students, tan hyperbolic inverse small v upon capital V और small v equals to capital V tan hyperbolic gt upon v। and we have equation v square equals to 1 minus e to the power minus 2gx upon v square। we have from these equations v square tan hyperbolic square gt upon v v square 1 minus 2gx upon v square और e to the power minus 2gx upon v square equals to 1 minus tan hyperbolic square gt upon v और sec hyperbolic square gt upon v और e to the power 2gx upon v square equals to cos hyperbolic square gt upon v and 2gx upon v square equals to log cos taking square roots gx upon v square equals to cos hyperbolic gt upon v और gx upon v square log cos hyperbolic
जी टी अपॉन वी, और एक्स इक्वल टू वी अपॉन जी वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉस हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी. That is the relation between x and t.